Okay, Sumit, right? Kindly just introduce yourself in a brief so we can talk further. Yes, sir. Good evening, sir. Sir, I'm Sumit Kishore. I was born and brought up at Pune, Bihar. I have completed my school education from Pune. Then I went to Delhi to complete my graduation and completed my graduation in microbiology from University of Delhi. Then I went to BHU to pursue my higher education and completed my master's in applied microbiology from Banaras Hindu University in 2006 and completed master's in 2016. In that year, I joined DRDO as a senior technical assistant B and currently serving in DRDO as technical officer. And my hobbies are traveling, photography, and watching scientific documentaries. Okay, means your academic journey was totally microbiology based, right? Yes, sir. Okay, Sumit, suppose you are in a microbiology laboratory and I just want to count the cell number, bacterial cells number. So, can you suggest some possible techniques for the counting of a bacterial cell number? Yes, sir. There are a few methods by which we can count the bacterial number in the sample. Number one is through the CFU method. In the CFU method, we prepare the serial dilution of the sample, and then we culture those sample onto the agar media, and based upon that, the viral cells were count, and based upon that, finally we calculate the CFU. That is a colony-forming unit in the sample. Apart from that, we also use the port plate method, by which first the samples were prepared, and then it was put in the agar plate, and thereafter we pour nutrient agar or any agar media, and based upon that we count the numbers. Apart from that, we also use a spectrophotometer to count the viable cell number in the samples. So these are the few methods by which we can use determine the different cell numbers in the samples. Okay, good. Well done, Sumit. Can we use PCR technique for the bacterial cell counting? PCR, the I think the real time PCR can be used, but counting, sir, I have doubt whether it's possible or not. But definitely can be used, sir. The RT-PCR, real time PCR. Okay, okay, got it. Sumit, for the sterilization purpose, we generally uses UV light in microbiology laboratory. So my question is that what is the molecular mechanism of UV light to sterilize any surface or any glassware or any material? How UV light can, So yeah. so UV light is responsible to create thymine dimer. So it causes change in the nuclear structure of bacteria, and therefore it is not able to replicate further. So these are, I think, the thymine dimer is one of the way by which UV lights is a very good sterilizing agent. Okay, good. Bactericidal and bacteriostatic. These are the two terms used in the reference of a sterilizing agent. What is this? Sir, bactericidal is that agent which can inhibit the growth of microorganism, but bacteriostatic are those which can kill the microorganism. Okay, is it right? Yes, sir. I think this. I'm not recalling exactly, but these are the definition. Okay, Maybe interchange possible. yeah, exactly. The sidal, Maybe the suffix sidal is used for the ability of a killing of microorganism, yes, while static suffix is used for the inhibiting of the microbial growth. Yeah, yes. that Okay, is thank you the for this, sir. yeah. Okay. Little Generally, bit we use interchange. 70% ethanol for the sterilization of a surface or hand or any glassware, etc. So, is there any specific reason why we just only use 70% ethanol, not other like as 90 or 50 or 95, etc.? So 70% ethanol, what I have read somewhere that it is very much penetrable inside the bacterial cell, and therefore it solubilizes the outer membrane of bacteria. So therefore 70% is used generally in the microbiological lab. Okay, if I use these questions with the that is what is the mechanism, what is the molecular mechanism behind how ethanol sterilize the any surfaces, then what will be your answer? Sir, ethanol is probable reason that it solubilizes the cell wall. So by that way, it inhibit the bacterial growth.
Just only cell wall. Suppose if there are any other microbes like some algal cells, some that is virus cells, so we cannot use this ethanol for the removal of that. We can use I think solubilizes a plasma membrane also, but Yeah. therefore the plasma membrane cell wall. Yeah, therefore we use it as a inhibiting agent. Okay. 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 That means we can use for the bacterial as well as viruses as well as fungus. Yes, sir. Okay, Sumit, I will suggest you that is go for this, and you have to know why and what is the possible mechanism of ethanol, how ethanol can be used as a stabilizing agent. And okay, so my next question is that is bacteria has a good ability to replicate itself within a limited time duration, right? So suppose you have a Yes, two sir. different culture of bacteria, that is culture number A and culture number B. Okay, and you just kept these two bacteria for 24 hours of incubation period, and after 24 hours you just take a sample and take an OD, and for bacterial sample A the OD is written as 0.85, and while for the sample B the OD is written as 1.25. Based on these data, which kind of informations we can inferences, and which kind of information we can predict, what is the mean of that? Sir, if the time is same Yeah. and we have incubated at the same time, the possible reason could be that the 1.25 OD in that the bacteria has replicated very fastly. So that because of that, the density of cells are higher in that particular sample as compared to 0.8 OD. Okay, that means the higher the OD value, that means what is the rate of the replication is higher. Higher, yes, sir. Okay, in bacterial growth kinetics, we have differently four phases. That is, lag phase, log phase, steady phase, and decline phase. Why this kind of a phase patterns observed under the in case of bacterial population? When we inoculate bacteria, so first the bacteria will prepare to divide. So that delay is called the lag phase. And then after the preparing the cell for the division, the bacteria will move to the log phase, where the bacteria will replicate fastly and it will double its number. And then after that, it will reach to the stationary phase when the nutrient in the media reach up to optimum level. Beyond that, the nutrients are not available in the media. So at that moment, the bacteria will reach the stationary phase, and then because of the rising toxin and other substances and the less nutrient present in the media, it will go to the death phase. So these are the four phases of the microbial growth. Okay, very good, well done. Sumit, nowadays the researcher community, that is the one of the domain of the researcher is the that is biofertilizer. Have you heard about this? Yes, sir, Yes. biofertilizer. I've heard about this. What is biofertilizer? So biofertilizer, what I have read that it's using microorganism to give special essential nutrients to the plant. Like nostoc is one of the nitrogen fixing bacteria. So by using the nostoc or other azotobacter, we provide these bacteria will fix nitrogen and provide ammonia to plants. So the biofertilizer could be like that. So these are the only example that I'm recalling as of now, sir. Okay, Sumit, have you heard about the phosphate solubilizing bacteria, that is PSB? Yes, sir. I did experiment in my graduation. So Okay, in 2012, I think. so can you say something about this? What is PCR, PSB? That I is, will try. Definitely, I will try, sir. Whatever I am recalling as of yeah, now. go for it. What is PSB? Phosphate solubilizing bacteria are those bacteria which uses the inorganic phosphates present in the soil and convert it into the organic phase. So these organic forms of phosphate will be utilized by the plants for their metabolic activities. So the phosphate solubilizing bacteria play a very critical and important role in the overall growth of plant. So this is the role of the phosphate solubilizing bacteria. Well done, very good. Okay, Sumit, microbiology and immunology.
these two subjects are interconnected, right? That we can say that ki without microbiology there is no significance of immunology. How and why a microbiologist must know the concept of immunology? So microbiology, we know microbiology because that it has a role in disease and spreading of diseases. Yeah. So therefore, for disease perspective, once the disease comes, then obviously the immunology has to play a key role in that. So because most of the diseases that we know are from the microbe origin, whether it's a we know say it, influenza or it's recently coronavirus. So therefore, these microbes play it trigger immune response when it comes to our body. So then it will through the innate immunity or through the adaptive immunity, our cell will try to eliminate these microbial threats. So by that way, the microbiology and the immunology are linked in some. Well done. Sumit, we have a different kinds of methods and agents for the sterilization of any surface, any glassware or whatever, etc. Like as we have some chemicals, we have some method like as autoclave, heat, etc. Do you have? Can you suggest some gaseous molecules which has ability of sterilizations or sterilizing agent? Gaseous are, I think it's ethylene oxide. I'm not recalling right now. It can be used as a sterilizing agent. But apart from that, I'm not recalling any other gaseous Okay, agent. if I ask to you why how ethylene oxide can act as a sterilizing agent, what is the molecular mechanism behind it? Sorry, sir, I'm not recalling it right Okay, now. if there is two options, ethylene oxide can use as bactericidal or bacteriostatic, then what will be the answer? So I think it kill bacteria. So it's a bactericidal. I think. Bactericidal. Okay, but not sure. Yeah, but no, sir. Okay, Sure, okay. that's- Sumit, as you are a microbiologist, so what is BSL? It's a biosafety level. Different biosafety level has been assigned for the BSL. Sir. Okay, so there are basically four different level of a BSL. That is one, Four two, three, levels. four, five. One, two, three, four. Then what is the order of their intensity and what is the order of their safety level standard? Sir, for normal day-to-day laboratory work, we use BSL 1, that is also called a laminar airflow. And once we move towards the higher research or through the more sophisticated research, like tuberculosis or HIV or other infectious diseases, then we use a BSL 4 level. So it is from 1 to 4. This is the level of biosafety. Okay, so we suppose you are in a microbiology laboratory and you are dealing with some raspberry bacteria, which is one of the famous bacteria associated with the root plant root, right? So you are dealing with the raspberry bacteria. Which kind of a BSL laboratory you have to maintain and you must have? Sir, rhizospheric bacteria is a plant origin bacteria. So these bacteria are not so pathogenic for the humans. So in that certain case, we can use up to BSL 2 is safe because 3 and 4 are very costlier. So up to BSL 2 we can use. BSL 1 and BSL 2 for the raspberry BSL, bacteria. yeah, 1 or 2, yes. Sir. Very good, well done. Okay, can we move from immunology? Yes, sir. Are you comfortable in immunology? Yes, sir. Okay, so Sumit, tell me one thing. Antibody is one of the major key important molecules in the immunology, right? And we have a different kinds of immunoglobulin, that is antibody in our cells. That is like as we have five different kinds of antibody. What is the key factor which makes them different from one another? Instead of having same kind of a polypeptide and same kind of a function and same kind of a structures, what make it different? Sir, there in that, sir, once we go through the VDG rearrangement, so the constant reason is something which make them different. So it's a constant reason. I think is the one reason. I think the FC it could be the responsibility is the reason behind different type of antibody.
Okay, in antibody there is a region that is known as Hing region. What is this and what is the function of this? Sir, hinge region, I think it is for the joining of two peptide. That is the one heavy chain light chain, another heavy chain light chain is joined by the hinge region. It Do is all kind of antibody have Hing region? no, sir. I think it's IgA have the hinge region. I'm not recalling exactly, but not all have a hinge region. Okay, but not all kind of antibody have Hing region, right? Yes, sir. Okay, suppose you are dealing with a secretory antibody A, right? And Right. you have to go for the electrophoresis. Then how many bands will be there on the electrophoresis gel? IgA without digestion and nothing, sir. Ig secretory antibodies A. Antibody A have a two kind. That is one is the serum antibody A and one is another is the secretory antibody A. So you are dealing with the secretory antibody A and go for the SDS phase electrophoresis. So how many number of band will be there? For IgA, sir, they are IgA joined by two antibody. So if we go through that, then I think two band that we will get. Only two bands. Uh, right, sir. As okay, the same question is for if I ask to you that is for the antibody M, then what will the answer? IgM is a pentamer, so we will get five different five band in that. Okay, and what will be the for antibody G? One band, sir. One band only. How many peptides are there in the antibody, Sumit? Sir, there are two peptide, one heavy chain and one light chain. There are only two peptides. One heavy chain, sir, and one light chain. So total four, but one side is a one heavy chain light chain, another side one heavy chain light chain. So total four polypeptide chain. Total four peptide. So if antibody has four different polypeptide, then how it is possible to have a single band? Oh, sir, actually, I get the answer because without digestion. So if we digest them, then definitely we will get different bands, No, sir. no, there is no digestion. Just you have to go for the SDS based electrophoresis. There is no any trypsin, chymotrypsins or beta carotenoids and all such kind of digestion. There is no digestion. Just you have an antibody and go for the SDS based electrophoresis. Then what will be the number of bands there? Sorry, sir, I'm not able to recall this as of now. Okay, antibody has a two major function, right? That is one is the effector function and one is the antigen binding factor. Which part of an antibody play the role of effector function? Sir, effective function is a FC region play effective function. Fc region. What is Fc? FC region. This is a fragment of crystalline. Fragment of a crystalline. Crystalline. And what is Fab? It's the portion of antibody that is the active region is the variable region, which usually binds with the epitope region of antigen. Okay, Sumit, if I asked you what different kinds of chemical bonds are involved in the antibody structures, then what will be the answer? Sir, hydrogen bond is one bond which is responsible, which is involved in the hydrogen, which is involved in the antibody structure. Apart from that, sulfur disulfide bond is one bond which is involved in that. Apart from that, this is a hydrophobic and hydrophilic interaction between different groups of protein. So these are some of the interaction involved in the antibody. Okay, Sumit, in microbiology laboratory, we generally uses NS. Have you heard about the NS, normal saline? Yes, sir. What is this? So normal saline is a isotonic solution. That is, I'm recalling that is a 0.9% of NaCl. So this solution is used to prepare different microbial samples For the storage of microbial cell. for different cellular for different experimental purpose. We prepare normal saline. Normal saline. Okay, suppose you want to store a microbial culture for a long time, like as a month or year. So, what kind of a different procedures are there for the storage of microbial culture?
Sir, if we want to store it for the longer time, then we can go for storing it in liquid nitrogen by dipping in the glycerol and then store it in liquid nitrogen. Apart from that, we also use a freeze drying method to store it for the longer period of time. And in the deep freezer, if possible, then a minus 80 degrees Celsius can be used to store it for the longer period of time. So these are the few methods that we use to store it for the longer period of time. Okay, suppose you isolated a bacteria from the soil, right? And you want to just identify these unknown bacteria. So, what will be the steps for the identification of bacterial species? From soil, sir. Yeah, So we can identify it based upon the morphological character, if possible. Then after, if another is the by selective medias, there are many medias which are selected to the particular organism. So we can go through that selective media, if possible. Then for the final identification, we can go through the molecular method of identification. well, very good. So, Miss, suppose you want to take samples from the soil, water, and air for the isolation of a different bacterial species. So, how you can suppose you just take the soil sample and you take just the water sample. If you want to isolate some bacterial population from the air sample, then what will be the procedure for air sample identification? How you can take air sample? Sir, for I haven't did it before, but we can use HEPA filter if possible. So through the HEPA filter, the particle all the particulates will get separated, and through that we can culture those filtrate. So that can be one of the method to culture the microscopic. Okay. Sumit, suppose you just want to examine the surface structure of a bacterial population or bacterial cells. So, which kind of a microscopy will you use? For surface analysis only. Yeah, For surface, we can use a SEM scanning electron microscope. same electromicroscopy. SEM, yes, sir. Okay, SEM. okay, good. Uh, Sumit, suppose you have a anaerobic kind of a bacteria, right? And you just want to uh, examine the glucose uptake of that bacteria. Glucose uptake, that means a bacterial cell is uptaking glucose or not. So, which kind of experiment you will set up to conduct this experiment? Anaerobic bacteria, sir, will go through this lactic acid or other metabolism. So currently, sir, I'm not recalling it exactly by how we could go for the anaerobic one. Okay, so Miss, suppose in a soil or in a water, there are both kind of a bacteria that existing, that is autotrophic and heterotropic. And you just want to isolate heterotropic of a bacteria. Then how you can filter and how you can separate from autotrophic and heterotropic bacteria just only for the heterotropic bacteria? As for heterotrophic bacteria, sir, if you want to separate, then we give them some light source if possible. So autotrophic bacteria will grow in the light source, but otherwise heterotrophic bacteria will not grow in that particular environment. So that way, by that way, we can separate it. Okay, can we use some chemical media for the heterotrophic bacterial isolation? I'm not recalling, sir. Okay, Sumit, can you suggest some immunodeficiency disease? Yes, sir. Some immunodeficiency disease like SCID, severe immunodeficiency. Then AIDS is one of the example that is the acquired immunodeficiency virus syndrome. So these are two immunodeficiency that I'm talking. Okay, Sumit, one last question. Viruses is not considered into the microorganism. When we define microorganism, we excluded these viruses. What property of a viruses is not in viruses that may have to complete into the definition of a microorganism? Organism? Why viruses is not considered into the microorganism definition? So microorganism have two important characteristics. Number one is they have the active metabolism,
Number two, it reproduces its own. But the virus lacks both. It is unable to metabolize by its own. It is in the dormant phase. Once it enters the bacteria, then only bacteria or any host, then only it able to metabolize and able to replicate. So these are the two reasons why it is not classified under this classification. Okay, well done, Sumit. Sumit, suppose you have a one bacterial cells and one is the eukaryotic cells, that is aerobic cells, and for the glucose metabolism, there is a one single common process, that is a glycolysis. Is there any differences in bacterial and eukaryotic cells in glycolysis process, in or both are in the same process? Sir, once it go through glycolysis is common for all. For the prokaryotic and the eukaryotic, the process is same. Okay, that means there is no any differences in eukaryotic as well as prokaryotic. Yes, for Matlab, glycolysis is same. everything is same for the glycolysis. Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. All the designs are same. So, yes, sir. Yeah, I'm sure. Okay, Sumit. Well done. So now it's your turn. If you have any query, any questions, any doubt, any suggestions, and anything else regarding your upcoming interviews, then you can ask to me. And now the session has completed. So be relaxed and feel comfortable. And now we can talk in Hindi also if you feel comfortable in Yeah, Hindi. sir. Yeah. सर मैं बस आपका ही फीडबैक जानना चाह रहा था मतलब व्हाट इज द योर फीडबैक ऑन दिस Yeah. खास Feedback. करके वो क्वेश्चन जो मैं आंसर नहीं कर पाया सम वैसे देयर आर फ्यू वैसे क्वेश्चन दैट आई उन सवालों के आंसर्स आपने नहीं दिए जिनको मैंने बहुत ही टेक्निकली बना के पूछा। वो किसी ऐसे मतलब बुक में नहीं थे और वो ऐसे पढ़ने की चीज़ें नहीं थी। जिन चीज़ों को जो चीज़ें आपको सिलेबस में पढ़ने के लिए दिया गया और खास करके माइक्रोबायोलॉजी से, उस पे आपके आंसर्स काफ़ी अच्छे थे। उन पे आपकी थोड़ी पकड़ ठीक थैंक है। यू सर हाँ, थोड़ा-सा एक सजेशंस आपके लिए और भी है, आप माइक्रोबायोलॉजी पे फ़ोकस कर रहे हैं तो जो माइक्रोबियल कंट्रोल के लिए जो पूरा मेथड है ना, जैसे केमिकल्स हैं और मेथड्स हैं, इनको थोड़ा-सा एक बार अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे सपोज़ जैसे जैसे मैंने आपको पूछा कि इथेनॉल का क्यों 70% ही हम यूज़ राइट करते हैं? तो उसके पीछे का जो मैंने जो सवाल आपसे पूछा था कि क्यों नहीं हम 50% या 90% यूज़ कर सकते हैं? जनरली क्रिस्टलाइजेशन के पर्पस के लिए 55 से 95% का रेंज क्या है वो अलॉटेड है। आप उस रेंज में किसी भी इथेनॉल के कंसंट्रेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिज़्म ये होता है कि चूँकि इथेनॉल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और ओके सर मेम्ब्रेन में लिपिड क्या है? वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो लिपिड ये जो इथेनॉल होता है ये लिपिड को क्या करता है? सॉल्युबलाइज़ कर देता है। और ड्यू टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड इन द इथेनॉल, जो मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी होती है वो क्या होती है? लॉस हो जाती है। और जैसे ही मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है, सारे सेल्स के अंदर के जो मटेरियल होते हैं एक्सपेल आउट हो जाते हैं बाहर की तरफ, और वो सेल्स क्या होती है? वहीं पे रप्चर हो जाती है, मतलब डेथ कर जाती है। तो दैट इज वाई इथेनॉल इज वन ऑफ द स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में क्या करते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। बट सर इसमें 70% अगर कहें तो वाई 70% हाँ, पर्टिकुलरली 70% की अगर हम लोग बात करते उसका हैं तो आंसर क्या है 70% का जो सॉल्यूशन है कंसंट्रेशन, वो लिपिड के सॉल्युबिलिटी के लिए, आपने एक वर्ड सुना होगा हाइड्रोफोबिसिटी एंड हाइड्रोफिलिसिटी, है ना? राइट 70% इथेनॉल जो है उसकी उसका जो कंसंट्रेशन है वाटर एंड इथेनॉल का, वो कंसंट्रेशन लिपिड के सॉल्युबिलिटी के लिए मोर एफिशिएंट पाया जाता है। अगर ओके आप हायर कंसंट्रेशन को यूज करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी लेस हो जाती है। लोअर कंसंट्रेशन अगर आप यूज करेंगे तो भी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? लेस हो जाती है। सो टू लेट्स मेक मोर ओके soluble lipid molecule 70% इथेनॉल इज रिकमेंडेड, राइट? ओके तो सर इस कंसंट्रेशन पे लिपिड का डिसरप्शन बहुत तेजी से होता है। दैट इज वाई हम 70% इथेनॉल को क्या करते हैं? यूज करते हैं, राइट? ओके सर जैसे दूसरा मैंने आपसे सवाल पूछा था कि यूवी रेडिएशंस को हम एज अ स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। इसकी ये जो प्रॉपर्टी है उसके पीछे का मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है और इसके पास क्या प्रॉपर्टी है? बैटरीलोसाइडल है या बैटरीलो स्टैटिक है? तो आपने आंसर इसका ठीक दिया कि सर ये थायमीन डाइमर को बनाता है। बेसिकली वर्ड आप पाइरिमिडीन यूज कर सकते हैं। पाइरिमिडीन डाइमर का फॉर्मेशन होता है। चूंकि यूवी लाइट जो होती है वो सबसे ज्यादा मोस्टली 260 नैनोमीटर पे क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, राइट? और ये वेवलेंथ की लाइट जो होती है वो न्यूक्लिक एसिड क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है।
वैसे तो बैक्टीरिया के पास अगला सवाल मेरा बन सकता था, आपसे मैंने पूछा नहीं। सवाल ये बनता है कि बैक्टीरियल सेल्स के पास अपना डीएनए को रिपेयर करने का सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट है। थायमिन करेक्ट डाइमर सर। बनता है, थायमिन डाइमर को रिपेयर करने का भी सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो फिर कैसे यूवी रेडिएशन जो है वो बैक्टीरियल सेल्स को किल कर देता है? तो उसके लिए आपको आंसर ये करना है कि सर जब कंटिन्यूअसली आप आपने देखा होगा कि जब यूवी लाइट को आप लेमिनार एयर फ्लो में ऑन करते हैं, तो सर्टेन टाइम का एक्सपोजर दिया जाता है। जैसे 5 करेक्ट, मिनट 450 मिनट्स है। या वो टाइम ड्यूरेशन जो होता है ना, वो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाता है। इनिशियली बैक्टीरिया अपने आप को रिकवरी करता है अपने रिपेयर सिस्टम से, लेकिन चूंकि वो एक्सपोजर का टाइम ज़्यादा होने की वजह से उस जो थायमिन डाइमर होता है वो सब क्या होता है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बैक्टीरियल जो रिपेयर सिस्टम होता है वो पूरी तरीके से उसको नलीफाई नहीं कर पाता, और अल्टीमेटली बैक्टीरिया क्या होती है, डेथ हो जाती है। सवाल ओके आपसे यहाँ से सर। बन सकता है, आप चूंकि उस पे आपकी मास्टर्स है और आप उस पे एक्सपर्टीज भी है, तो जैसे सपोज आपसे पूछा जा सकता है कि 260 नैनोमीटर पे ही एब्जॉर्प्शन क्यों है, बाकी वेवलेंथ पे क्यों नहीं? तो उसके लिए आप आंसर्स कर सकते हैं कि ये जो फ्यूरिन एंड पायरिमिडिन में जो रिंग है, उस रिंग में क्या है, डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो एब्जॉर्प्शन एनर्जी है वो 260 से 280 के बीच में क्या करती है, मैच करती है। और वही जो पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स जो डबल बॉन्ड है, उसी डबल बॉन्ड की वजह से ही सिर्फ क्या होता है, यूवी लाइट का अब्जॉर्प्शन होता है। अगर वहां से वो डबल बॉन्ड हटा दिया जाएगा तो कोई भी अब्जॉर्प्शन यूवी लाइट का नहीं होगा, और ना ही फिर यूवी लाइट को एज अ स्टलाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाएगा, और ना ही यूवी लाइट फिर किसी बैक्टीरिया को किल कर पाएगा। ओके ओके, तो वैसे तो सर, एक आपके और क्वेश्चन सर, हाँ आपने आपने बोला था ग्लूकोज एनारोबिक के लिए जो मेथड होगा, तो वो क्वेश्चन सर मुझे थोड़ा या मैंने कॉन्सेप्ट पूछा था रह कि गया, मतलब सपोज समझ। आपके पास बैक्टीरियल सेल्स है और अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके बताना है कि हाँ ग्लूकोज अपटेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आप कर सकते हैं, टैगिंग कर सकते हैं, फ्लोरिसेंट डाई से टैग कर सकते हैं, या रेडियो लेवल लेवल कर सकते हैं ग्लूकोज के किसी एक एलिमेंट को, चाहे कार्बन को, चाहे ऑक्सीजन को, चाहे हाइड्रोजन को। अगर आप उसकी टैगिंग कर देते हैं तो अगर बैक्टीरियल सेल्स में जाएगा, तो बैक्टीरियल सेल्स से वो फ्लोरेसेंट लाइट लाइट क्या होगी, इमिट आउट होगी। और उसकी लाइट की इंटेंसिटी के बेसिस पे आप बता पाएंगे कि यस बैक्टीरियल सेल्स जो है हमारा ग्लूकोज को अपटेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो ओके। आप टैगिंग कर सकते हैं जीएफपी से, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन से, या फिर आप रेडियो लेबलिंग कर सकते हैं। ये दोनों तरीके से आप उसको यूज कर पाएंगे। ओके, सुमित आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है, और एक चीज़ थोड़ा-सा मैं थैंक यू आपको सर। सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप प्लीज। आंसर्स को दे रहे होते हैं तो बहुत फ़ोकस्ड होते हैं, ये अच्छी बात है। थोड़ा-सा आपके फेस पे सीरियसनेस दिखाई देता है, जैसे लगता है कि आप बहुत स्ट्रेस हैं और बहुत टेंशन में हैं। तो फ़ील लाइटली थैंक यू एंड सर। अपने फेस पे हो सके तो लाइटली आप स्माइल को रखें, ताकि इंटरव्यूअर को ये लगे कि आप कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं। बाकी आपकी कम्युनिकेशन ठीक है, और आप चूँकि माइक्रोबायोलॉजी से आपने यूजी, पीजी किया हुआ है और अभी आप काम भी कर रहे हैं, तो आपकी माइक्रोबायोलॉजी पे जो कॉन्सेप्ट है, वो भी ठीक है। बट फिर भी मैंने आपको बोला कि आप कुछ-कुछ चीज़ों को थोड़ा एक बार फिर से ब्रश अप कर लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा श्योर सर। ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? और ठीक है सर। बाकी आपकी ड्रेसिंग सेंस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे आप लग रहे हैं, देख कर के आपको थैंक यू सर। है ना? तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही 2-3 चीज़ें हैं जिस पे अगर आप सुमित कब है आपका, 12 तारीख को है? 12 को है सर। ओके, तो अभी आपके पास टाइम है। थोड़ा-सा मैं आपको सेशन दूँगा कि आप इम्यूनोलॉजी को भी थोड़ा एक बार ब्रश अप कर लीजिएगा। ख़ास करके जैसे मैंने आपसे पूछा कि एंटीबॉडी को अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं तो कितना बैंड आएगा, आप वो आंसर नहीं कर पाए। जैसा कि आपको मालूम है कि एंटीबॉडी में 4 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स हैं, जिनमें से 2 क्या हैं आपके लाइट चेन है, 2 क्या हैं आपके हेवी चेन है। 2 जो लाइट चेन है उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सेम है, राइट? तो मॉलिक्यूलर सेम अगर होगा किसी प्रोटीन का, तो एसडीएस इलेक्ट्रोफोरेसिस में बैंड हमेशा सिर्फ एक आएगी। तो 2 लाइट चेन के लिए बैंड ओके। एक आएगा और 2 हैवी चेन के लिए बैंड एक आएगा, सो देयर विल बी 2 बैंड, राइट? मेरा सवाल था आपसे कि जब मैं सेक्रेटरी एंटीबॉडी को अगर ट्रीट कर रहा हूँ, अगर डील कर रहा हूँ, तो कितना हमारा बैंड होगा? तो सेक्रेटरी एंटीबॉडी जैसा कि आपको मालूम है कि कैसा है, बाइवेलेंट है, राइट? बाय और बाय। बाइवेलेंट को ऐड करने के लिए वहाँ पे एक एक्स्ट्रा चेन लगती है, दैट इज़ द जे चेन, जी जी जी। है ना? जे चेन के अलावा सेक्रेटरी एंटीबॉडी में एक आपकी चेन होती है पेप्टाइड चेन। तो वहाँ पे आपका एक बैंड आएगा लाइट चेन के लिए, दोनों को मिला करके मतलब 4 लाइट पेप्टाइड चेन के लिए एक बैंड।
4 हैवी पेप्टाइड के लिए एक बैंड, एक राइट? मिनट। और एक बैंड आएगी जे चैन के लिए और एक बैंड अच्छा। आएगी एक्स्ट्रा पेप्टाइड चैन के लिए। दैट मीन्स देयर विल बी 4 बैंड्स। ओके सर। और अगर हम एंटीबॉडी एम की बात करते हैं तो एंटीबॉडी एम के पास क्या होता है, पेंटावलेंट है। इन सारे पेंटावलेंट के लिए जो बैंड आएगी वो सिर्फ दो आएगी, एक आएगी आपकी लाइट चेन के लिए और एक आएगी आपकी हैवी चेन के लिए। हेवी सर। लेकिन उन पेंटावलेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक जे चैन पाया जाता है जो कि ये चैन। पेप्टाइड है। उस जे चैन का एक बैंड आएगा, दैट मीन्स देयर विल बी थ्री बैंड। ठीक है। ओके सर। ओके सुमित। ओके सो सर। इंटरव्यूअर हैं, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि अच्छा। मैंने सारे डिफरेंट टाइप्स के सवाल आपसे पूछे, फैक्ट बेसिस पे भी, मेमोरी बेसिस पे भी, एनालिटिकल टाइप से भी, डिजाइन टाइप से भी। तो लगभग आपके यस सर। जो मतलब मिला जुला करके आंसर्स रहा। सिर्फ जो डिजाइन टाइप वाले क्वेश्चंस थे वहां पे आप इंस्टेंटली उसके लिए फ्रेम नहीं कर पाए हैं। अदरवाइज जो फैक्ट बेसिस था वो भी आपने आंसर ठीक किया। जो कॉन्सेप्ट बेसिस था उसमें भी आपकी आंसर्स ठीक है, आपकी पकड़ अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मिला जुला करके ये है कि आपका जो सब्जेक्ट पे आपकी जो सर वो डिजाइन एक्चुअली लैब में अलग अलग काम इन्वॉल्व रहता है, सो अभी सब्जेक्ट से टच मतलब दूर हुए काफी दिन एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली तो मतलब आपकी ऐसा नहीं होता कि ये हमें जो तो जॉब है आपकी माइक्रोबायोलॉजी वो में परमानेंट है, इन्वॉल्व है गवर्नमेंट कि। जॉब है? यस सर, परमानेंट है सर। अच्छा ओके, तो आपको आपको किस टाइप का काम करना होता है वहाँ पे? सर हमारा काम अलग अलग है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग है और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि जीसी है, डबल एस है, डीएलएस है। तो उसको हैंडल करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उस प्रोजेक्ट्स में थोड़ा साइंटिस्ट के असिस्ट करने होते हैं। एंड देन आफ्टर दैट जो प्रोक्योरमेंट है, फाइल वर्क है, नोटिंग है, तो अच्छा, वहाँ पे भी रहता है। तो तो इट्स अ डाइवर्स। अभी आप कौन से इंस्ट्रूमेंट को डील करते हैं, डबल एयर्स को? डबल एस जीसी उसमें असिस्ट कर रहा हूँ सर अच्छा मैं, और ओके। डीएलएस डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग। तो मतलब कि ये डायरेक्ट कोई रिक्रूटमेंट आई थी जिसके थ्रू आप गए थे? यस सर, 2015 में आई थिंक आई थी अच्छा रिक्रूटमेंट, ओके। बेस्ड अपॉन द बैचलर्स डिग्री इन चलिए, माइक्रोबायोलॉजी। तो उसी का ये इंटरव्यू खत्म हो जाएगा सुमित ना, तो फिर एक सेशन करेंगे जिसमें आप जो बाकी बायोटेक के स्टूडेंट्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, उनको बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी है आइडिया नहीं होता है। तो बेटर होगा सर। कि आप डीआरडीओ में हैं और आप कैसे इस जॉब को आपने ग्रैब किया, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि वो इस जॉब को ले सकते हैं, फर्दर कब वैकेंसी आने वाली है, इसको लेकर के एक हम लोग सेशन करेंगे। और वो बाकी जो सर। अपकमिंग स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए क्या होगा, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है? तो ओके। आप ओके इंटरव्यू पहले सर। दे लीजिए, फिर इसके बाद आपसे एक बार और हम लोग इंटरेक्ट होंगे जिसमें आप अपने एक्सपीरियंस को लेकर के और जो अपकमिंग जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको लेकर थोड़ा आप अवेयर करें कि कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए। ठीक है? ओके। ओके सर। चलिए सुमित, आज के लिए अच्छा रहा आपसे इंटरेक्ट होकर के, काफ़ी अच्छा लगा बात करके, और आपका तैयारी भी ठीक है। बाकी अगर इन बिटवीन आपको कुछ प्रॉब्लम थैंक होती है यू। तो आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं और नंबर भी आपके पास है, आप मैसेज कर सकते हैं। हमारी तरफ तो से सर। आपको आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ढेर सारे बेस्ट विशेस, अच्छे से आप इंटरव्यू दे करके आइए और थैंक यू सर। आने के बाद अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। ओके श्योर सर, थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट। थैंक यू।